Hello and welcome back to our Microsoft Excel formulas and function series जहां पर हम already formulas के basic concepts के बारे में और conditional functions के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे basic mathematics and statistics function के हवाले से, जो कि aggregator functions होते हैं। उन्हें आप एक list of values फराहम करते हैं और वो उन list of values को aggregate करके आपको एक single value में आंसर फराहम करते हैं। ये फंक्शंस बहुत ही फायदेमंद हैं जब आप किसी लार्जर डेटा सेट को एनालाइज करना चाहें और उससे यूजफुल वैल्यूज या आउटकम्स ड्राइव करना चाहें। देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ एग्रीगेटर फंक्शंस। द सिंपल एग्रीगेटर्स, जिन्हें आप एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज फराहम करते हैं एंड वो उनको तमाम वैल्यूज को एग्रीगेट करके आपको सिंगल वैल्यूज में आउटपुट देते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ फिल्ट्रेशन आर्गुमेंट। देन वी हैव कंडीशनल एग्रीगेटर्स, जिनके साथ इफ लगता है और ये फंक्शंस आपको अलाउ करते हैं कि आपको स्पेसिफिक फिल्टर आर्गुमेंट डिफाइन करें और सिर्फ उन वैल्यूज को एग्रीगेट करें जो आपके लिए मायने रखती हैं। There is a third category of aggregator function which is called iterator functions, but that's a bit of advanced topic. We'll come back to it later on. So right now, without wasting any further time, let's dive in. यहाँ तक सिलेक्ट किया और यहाँ से मुझे क्विक स्नीक पीक मिल रहा है कि 918 डिफरेंट रोज है मेरे पास, विच मीन्स कि 918 मूवी टाइटल्स हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी रिलीज डेट, उनका वर्ल्ड ओवर टर्नओवर कितना था और उनके जॉनरा क्या था, मूवी रन टाइम क्या था और उनका लाइसेंस क्या था, समथिंग लाइक दैट। जस्ट दिस डेटा सेट फॉर अ क्विक इवेल्युएशन ऑफ आवर स्टैटिस्टिक्स फंक्शन कि हम किस तरह से स्टैटिस्टिक्स फंक्शन को यूज करके एक क्विक स्नीक पीक ले सकते हैं अपने डेटा सेट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज द सैंपल साइज? We'll use a simple count function here. Just count, and what we have to do is just give the range of values. Count only recognizes numerical values, so it's better that we apply this formula on a numerical value. And obviously this is what revenue is all about. So I can just select this range, close the parentheses, and I have this answer 980. It counts the number of rows in my given range of values that has a numerical value. Simple. Average, again the same thing. मुझे एवरेज सेल्स चाहिए तो मैं एवरेज का फॉर्मूला सेल्स के कॉलम पे ही लगाऊंगा। सेलेक्टेड ऑल ऑफ इट। मैंने सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज की जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन की। सो इट सेलेक्ट एवरीथिंग इन दैट टेबल। प्रेस एंटर एंड वी हैव द एवरेज रेवेन्यू, राइट। इसको हम क्विक चेक कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पे खड़े रह के कंट्रोल शिफ्ट डाउन की एंड यू हैव ऑल दीज वैल्यू सेलेक्टेड। एक क्विक स्नीक पीक आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये जो सम है इन सारी वैल्यूज का वो है 364 बिलियन एंड देयर आर 918 रोज एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज टाइटल व्हिच इज द सम टोटल ऑफ 364 323। लेट्स जस्ट ट्राई दिस, ठीक है? तो ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने सम लिया, राइट, दिस divided by 918 because these are the number of observations. So the average turns out to be 396, 866, 825, and this must exactly be the value which is shown here. The average function is actually calculating a simple mean average, very simple. Median sales, you just use median. Down below, up until here are the last two values. So we'll have, okay, 301. So this is the exact center of our distribution of values. So 918 divided by 2, so exact half बना for the sorted. So अगर हम अब जाएं 460 की तरफ, so you can see exactly the center of observation जो है वो 301 or something like that, and this is exactly what my median is. So simple, just a quick sneak peek of your data set. Mode, it might give an error, and it does. That is because mode means the most oft repeated value in your data set. So if there are no duplicates, mode will always yield an error. So this tells me that there are no duplicates in my given range of values. So what I can do is I can just write if error. If it gives me an error, just give me an answer that no duplicate values. Now I'm clear that we don't have any duplicate values, so I cannot find mode. Max works the same way. We should get the first value because we have already sorted this out.
and yes, we get the first value, which is the highest most. And min will work the opposite way, should give us the last most value because we've already sorted it, and that is 81.6 million, and that's exactly what it would be, right? Simple function. 75th percentile. अब इस रेंज ऑफ वैल्यूज को, जिसमें हाईएस्ट हमारे पास 2.8 बिलियन है और लोएस्ट 81.6 मिलियन है, अगर मैं इनको परसेंटेजेस एलोकेट करूं, मैं कहूं कि ये वैल्यू जो है 0 है और ये वैल्यू जो है 100 है, और इन बिटवीन जो भी वैल्यू होती है वो परसेंटेज टर्म्स में डिफाइन की जाए. सो दैट्स व्हाट दिस फंक्शन डज फॉर अस. परसेंटाइल, ओके, select this one and maybe 75th percentile, so I will just say 0.75 comma के बाद. So another thing is 25th percentile. So what I can do is simply I can, अच्छा मैंने कॉपी पेस्ट किया नीचे, तो दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच बिकॉज मेरे, आप देख सकते हैं कि मैंने रेफरेंसेस रिलेटिव छोड़े हुए थे, तो ये रेफरेंसेस हिल गए होंगे, ये D5 हो गया होगा और ये D, तो मेरी रेंज हिल गई. व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी इट लाइक दिस एंड देन पेस्ट इट, ताकि रेफरेंस मेरा ना हिला. मुझे 25th करना है तो आई विल जस्ट शिफ्ट इट टू 0.25 and now I get the 25th% value of my range of values. So that is 200. Now you can see this, जो highest value है वो 2.8 billion है, but most of the values are not the highest value or not even close to it. Even the 75th percentile value is 475, which is well short of 2.8 billion. So this tells you कि हमारी एवरेज जो है वो कुछ खास वैल्यूज की वजह से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली राइज अप कर रही है. देयर आर आउटलायर्स डेफिनेटली. तो ये आउटलायर, ये नहीं कि स्टैटिस्टिकल फंक्शन का काम ही यही है कि ये आपको अपने डाटा के बारे में इस तरह का स्नीक पीक देते हैं, कि आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है कि यार व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द मीन मोड. सिर्फ 75th परसेंटाइल 25th परसेंटाइल से पता चल गया मुझे कि 75% ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मैक्सिमम 475 मिलियन यील्ड कर रही है, नॉट मोर देन दैट, right? And it is proven by the fact that average is well below 475 as well. It's 396. So that's how we use this function. Again, stdev, not a complex function, very easy to use. stdev, again, you just have to select the range of values and it yields the answer. I don't know how to interpret this value as well as the next one, so I'll just skip this one because in the current context of scenario, इस value को हम किस तरह interpret करें, I have no idea. I'm not a statistician because this value is significantly crazy value. I don't know how to interpret it, but generally speaking, these two are the measure of dispersion within your observation, which technically means कि आपकी जो भी values है, मसलन average है 396 and the highest value is 2.8 billion. तो जितनी भी observation है उनमें कितनी variability है, and so this number is kind of telling me that variability कुछ ज़्यादा ही है, but कितनी ज़्यादा है और उसको कैसे इंटरप्रेट करना है ये statisticians के लिए हम छोड़ देते हैं. But just in case to let you know कि ये functions हैं और ये इस तरह से simple तरीके से ऑपरेट करते हैं. You just have to select a single column which contains all your values and it will produce the answer for you. Likewise, 10th highest value, so I'll use the large function. I'll give the array and I want the 10th largest value. So after comma, just write 10 and that's exactly what I get. Copy this down below, change it to 100, change the function to large, to small from large, and that's what I got. So we can check this out. The 10th value है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 5, 1, 5, 3, 4, 1, 399, and that's exactly what it is. And 100 lowest value, if you want to check from below, you can do that, and it should be right here. That's the 100th value. 157, 107, 755, and that's what it is, right? Simple. ठीक है, स्टैटिस्टिक फंक्शन में और ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं. एंड इन सारे फंक्शन में एक कॉमन चीज़ आपने नोट की होगी कि मैंने सिंपल सिर्फ रेंज ऑफ वैल्यूज डिफाइन की, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड व्हेन आई सेड कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉलम कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं. द फंक्शन आर नॉट गोइंग रो बाय रो and evaluating a certain condition. No, this is not what these functions are doing. These are just taking a single column as an input, and according to the function that they are supposed to perform, they are just aggregating all these answers into a single scalar value. जो कि again हमने different functions यहाँ use किए, तो हर function का अपना एक काम है. कोई count करके ला रहा है, कोई average बना के ला रहा है, कोई sum करके ला रहा है. हमने sum नहीं किया, but sum भी हम अगर इसको यहाँ पे आप sum कर दें इस formula को, ये आपको total sum value ला के दे देगा. So simple to use, nothing complex. I think
जस्ट वन मोर एग्जाम्पल में यहाँ पे देख के इसको स्लाइड को हम आगे लेके चलेंगे. दैट एग्जाम्पल इज इफ. अगर हमें सिंगल कंडीशन लगानी है, काउंट इफ, ठीक है, एंड आई वांट टू काउंट बाय दिस कॉलम फॉर ऑल दोज वैल्यूज, ऑल दोज केसेस व्हिच आर वर्ल्ड, यानी सिर्फ मैं उन मूवीज टाइटल्स का आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं जो कि वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन ने प्रोड्यूस किए. Yeah, 155. So, out of 918 titles, 155 titles belong to Walt Disney Studios motion pictures. Right? So, another example from the count. Count ने पूरे के पूरे सारी वैल्यूज को सम कर दिया कि यार टोटल 918 है, 918 यहाँ पे लाके दे दिया. काउंट इफ ने क्या किया, उसने हर रो को वन बाय वन चेक किया. जहां जहां वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन था उसको 1 की वैल्यू असाइन की, और जहां पे यानी कि ट्रू था उसको 1 की वैल्यू असाइन की, और जो फॉल्स था उसको 0 की वैल्यू असाइन की. और सारी रोज को कंप्लीट करने के बाद उसने जहां 1 था उन सबको सम टोटल कर दिया, तो आंसर हमारे पास 155 है. सो व्हेन वी यूज द इफ कंडीशन, अगर इसी फॉर्मूला को मैं काउंट, इनफैक्ट नाउ अब काउंट इफ की वजह सम इफ यूज करते हैं. लेट्स जस्ट यूज सम इफ नाउ. तो अगेन अब कंडीशन थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी. रेंज वही है, क्राइटेरिया भी वही है. एंड में मुझे सिर्फ सम रेंज भी डिफाइन करनी है कि वो चेक तो यहाँ से करेगा. फॉर्मूला थोड़ा सा हिल गया, मैं अपने कंडीशन को दोबारा रीसेट कर दूं. B4 to B921 परफेक्टली फाइन. तो कंडीशन चेक तो यहाँ पे करेगा, लेकिन वो सम इसको नहीं कर सकता. इट्स अ टेक्स्ट वैल्यू. तो सम करने के लिए उसको हमें कोई ना न्यूमेरिकल वैल्यू भी देनी है, तो वो लास्ट आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन होगी, व्हिच इज दिस. सो नाउ आई नो के there is 155 titles that yielded 82 billion in total for this particular company. I have the sum answer, right? अब अगर मैं यही चीज sum if की बजाय sum if से अचीव करना चाहूँ, same answer but sum if से, तो मुझे थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज करना पड़ेगा. मुझे पहले sum range डिफाइन करनी पड़ेगी. रिमेंबर, sum if में हमने रेंज लास्ट में डिफाइन की, एंड देन मैं डिफाइन करूंगा अपना क्राइटेरिया. क्राइटेरिया 1, which is whatever it is, Walt Disney Studios motion pictures, and I still get the same answer, right? But because sum ifs का मतलब multiple conditions के लिए भी ये formula use हो सकता है, but it does not mean कि multiple conditions में ही use होगा. You can also use it on a single condition as well, which is what I have done. But if I want to use it on a multiple condition, I'll just keep on doing the same thing again. जिस तरह मैंने यहाँ पे range दी और अपनी condition बताई, जिस कंडीशन को मैंने इस रेंज में चेक करना है, तो इसी तरह अब लेट्स से लेट मी जस्ट चेक समथिंग हियर. इनकी रिलीज डेट क्या है, और लेट मी लाइसेंस को कम बेस बना देते हैं. लेट्स से सो PG-13. ओके, सो लेट मी से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितनी सेल्स रेवेन्यू उन पिक्चर से आया है जिनका लाइसेंस जो है वो PG-13 था. So I'll again select this range of values now, this time around, comma, and I'll write PG-13 with an inverted commas, and I get the answer, which is much lower number than this. And this is what should I expect? Total अगर इतना revenue था, तो खाली PG-13 वाले license वाली movies से definitely कम आया होगा, and that's how I can use my sum if function. So nothing complex, nothing difficult. ये सब easy functions हैं क्योंकि ये basic functions हैं. So I'll leave it right here. Hey, thanks for watching. I hope you liked it. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so you receive regular updates. If you'd like to hear about any specific topic from us, do let us know in the comments so we'll accommodate that. See you soon.